Hello everyone, very good afternoon. I am Kapil Bhavande, your commentator for this match. Welcome to the Jfsc Classic Finals. It's hot and humid out there, and it's a fiery and fearsome bowling attack we are seeing. The first wicket has fallen without any score on the board. Aftab strikes. It's a great start to the very first over. The classic final is played between Gurjar James versus Parking Adda. I once again welcome all the viewers and spectators watching us live. Myself Kapil Bhavande, I'm back in the commentary box. So yes, definitely the question will be asked later that the final match, who is going to perform, who is going to fail, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये देखना होगा इस मैच में. Coming back to the cricket, news from the center was that Gurjar James have won the toss and they have decided to field first, and definitely their decision to field first is counting on them. They have done the first bloodbath of Parking Adda. Last ball to go of this over of Aftab. It's a fiery, firesome bowling we are seeing. Straight into the block hole this time. A good piece of fielding in the fine leg region. After end of first over, the score is 0 for 1 wicket. Start of the second over, bowler is Prem. We could definitely see a lot of swing, as this is red ball cricket, everyone's favorite, and it's heartbreaking. The news just came 2-3 days back that Rohit Sharma, jersey number 45, has retired from the test cricket, from the red ball cricket. What beautiful memories he has created for the Indian cricket team. Meanwhile, moving back to this match, the first runs are on the board. Again, a beautiful outswinger. Played it nicely, but definitely there is a fielder present and 1 run has been conceded. It's a classic derby. It's a classic red ball cricket match between Parking Adda and Gurjar James. So while batting first, Parking Adda has lost their first wicket in the very first over. Second over is
proceeded. 4 balls are done, 2 balls to go, 2 deliveries to go, and yes, we could see some beautiful visuals of Air India plane flying high in the sky. But just like the plane, are we going to see a high total in this final match, in this classic match of Jfsc? Smooth start by Gurjar Gems, slow and steady. Last ball to go in this over. Pitched it fully this time, and beautiful placement as well. End of 2 overs, the score for Parking Adda is 4 runs for 1 wicket. Aftab back onto attack. Straight into the block hole this time. Beautiful delivery. Aftab back onto attack. If we could see the wrist movement of Aftab, Straight into the the block batter hole could this not time. guess what Beautiful is the length delivery. he is going to bowl. It's a classic match. It's a classic T20 between Parking Adda and Gurjar James. This time slightly outside the leg stump, and yes, umpire signals this as a wide delivery. It was always going away. There is a definite movement we could see in the ball. After hitting the hard deck of the pitch, the ball is doing its magic, and which is obviously fruitful for the Gurjar James. They have got the first wicket in the very first over. This time nicely played into the covers region. There is a fielder present obviously. Six overs will be power play overs, and only 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle. Full toss delivery this time, nicely played on the onside, and yes, the umpire signals as the ball races away to the fence for 4 runs.
Beautifully placed this time. Again onto the covers region. There is a fielder deployed there. So the score now has reached 16 runs after falling the first wicket in the first over. Parking Adda need to strike back, need to capitalize. It's a classic red ball cricket match between Parking Adda and Gurjar James. Very good throw. Still 2 deliveries to go in this over. Meanwhile, strike has been rotated. Tushar facing Prem. What a beautiful and clean shot that was. Just as I thought that the ball will sail over the fielder's head, fielder has successfully caught that ball. Safest hands on the ground. The ball reaches into the hands of the fielder standing at long off region. It's another bloodbath. It's another wicket that has fallen for Parking Adda. 17 for 2. Still 1 ball to go in this over. After end of 2 overs the score is 17 for 2. 17 पे खतरा है बॉस. और इसी के साथ नया बैटर आ चुका है क्रीज पर, बिलाल. देखना होगा ये 17 पे खतरा किसके लिए साबित होता है, पार्किंग अड्डा के लिए या फिर गुजर जेम्स के लिए. दोनों टीमें अपने लीग स्टेज में काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहुंच चुकी है इस क्लासिक फाइनल्स में. Meanwhile, a new bowler on bowling mark from Garden End is Momin, starting with his first spell. Beautiful swing, swing and a miss. Beautiful start by Moming for his first over. Again a swing and a miss. So for all the spectators and viewers, let me remind you, this is a classic T20 match, not a test match. But what we are witnessing here, what we are seeing here is a complete setup of a test match bowling by the Gurjar Gems. Again a swing and a miss. Nice setup by Moomin. 3 deliveries hitting the hard deck.
moving away from the batter. Are we going to witness an in-swinger in the very next delivery? Let's see. Here it comes. Momin with his fourth ball. Yes, it was a in-swing. Slight elevation on that bounce. Slight bounce we could see. Definitely it was not of a surprise for me, because 3 balls that went outside of stump, fourth one has to come in. It has to come in, but it has to come in to the stumps. Two balls to go in this over. Here it comes. Omen this time. Slight bounce as well on this delivery. Played it nice. Played it nicely. Played it through. Strikes rotated. Last ball to go in this over. Parking Adda standing at 18 runs for 2 wickets. Again it was beautifully struck. That comes to the end of 5th over. After 5 overs the score is 19 for 2. Meanwhile, Prem continuing his spell now onto his 3rd over. He has been successfully bowling into the right arcs and has picked important wicket for his team. Oh, pure test match bowling, pure test match. Ball gripping, landing in the hard deck and moving away from the batter. The fielding team, Gurjar Gems, are completely dominating these 6 overs of power play. Right into the block hole, he was trying to pitch it up. A good fielding effort this time. Great awareness, even greater execution. Fielded like his life was dependent on it. And it is very important to save these runs for your team, as your team has already created a pressure on the batting team. Oh, beautiful delivery. What are we witnessing here? A slight nick of the edge and the batsman will have to walk back to the pavilion. See what he's trying to do. The Prem, what he's trying exactly to do here is he's trying to bowl outside the off stump for the 4 deliveries, and suddenly one delivery he'll bowl an in-swinger coming back to the stumps. This time steps out. Bilal was trying to put that away through to the covers,
but good fielding effort in the deep covers region. Last ball to go in this over. Parking Adda stands at 22 for 2. Here it comes. Last ball of this over. This time in swinger, but missing outside the leg stump. He'll have to bowl that again. Steps out, tries to pull it, play it full, misfield, and it will definitely cost them. Full marks for the athleticism, but eventually the ball will race away to the fence for 4 runs. End of the 6th over, end of the power play. It's 27 for 2. तो जी हाँ देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है मैच क्लासिक T20 पार्किंग अड्डा और गुर्जर जेम्स के बीच में। पावर प्ले के ओवर्स में पार्किंग अड्डा को कुछ खासा बैटिंग स्कोर जमा नहीं, लेकिन गुर्जर जेम्स ने इसका पूरा पूरा फायदा उठाया और 2 विकेट भी चटकाए अपनी टीम के लिए। मोमिन वापस एक बार आ चुके हैं गेंदबाजी पर। 3 गेंदें बाकी है, 3 गेंदें शेष है इस ओवर की। काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ सभी दर्शकों का यहाँ पे स्वागत किया गया है एक बहुत ही बेहतरीन कट शॉट के साथ। बिलाल ने खेल दिया था इस बार डीप थर्ड मैन रीजन में। टाइमिंग अच्छी इस बार, अच्छा एलिवेशन मिला था, अच्छा बाउंस ज़रूर मिला था और गेंद ये जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
मोमिन अगली गेंद डालते हुए इस बार काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेल दिया, कोई रिस्क नहीं उठाई। जानते हैं अब क्रीज पर डटे रहना ज़रूरी है। बिलाल और मनोज पार्किंग अड्डा की तरफ से पार्टनरशिप बिल्ड करने की चाहत में काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेल दिया। इस बार टच किया गेंद को, एक रन ज़रूर मिलेगा। ओवर की समाप्ति यहाँ पे 7 ओवर बाद स्कोर हो चुका है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़ते हैं वापस एक बार मैच की तरफ। इस बार बीमर डिलीवरी, सीधा बैटर के बॉडी पर ये प्रहार। देखिए भाई साहब, हेलमेट पहन लीजिए, बहुत ज़रूरी है अपनी सेफ्टी। सुमंतो अपनी दूसरी गेंद यहाँ पे फेंकते हुए आखिरकार गुर्जर जेम्स ने यहाँ पे डीप फाइन लेग रीजन में एक खिलाड़ी तैनात किया है। ज़रूर जानते हैं दोनों खिलाड़ी मनोज और बिलाल काफ़ी बेहतरीन कट शॉट खेलते हैं, इसीलिए फील्डर तैनात किया गया। 4 गेंदें शेष इस ओवर की। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे, काफी अच्छा अतिरिक्त उछाल जरूर मिला, लेकिन प्रशंसा करनी होगी जहाँ पे ये गेंद पिच की गई थी, काफी अच्छी लेंथ पे हिट की गेंद, थोड़ी सी बाहर की तरफ घूमी जरूर। स्विंग अच्छा मिला सुमंतो को यहाँ पर। 3 गेंदें शेष इस ओवर की। स्टेप आउट करके मारने का प्रयास, लेकिन गेंद जाके यहाँ पे लगी है सीधा स्टंप्स में। जी देखिए, रिप्ले में हम देख सकते हैं काफी बेहतरीन यहाँ पे यॉर्कर गेंदबाजी, सीधे टप्पे की गेंदबाजी, सीधे जाके हिट की ये गेंद। काफी बेहतरीन यहाँ पे खेल का प्रदर्शन सुमंतो द्वारा। जानते थे, पहचानते थे बैटर यहाँ पे कुछ हरकत करना चाहता है, आगे बढ़ के मारना चाहता है, और इसी का फायदा उठाया। नतीजा मिला एक और विकेट का पतन। स्कोर हो चुका है 37 रन्स फॉर 3 विकेट्स। जी हाँ, प्रशंसा यहाँ पे करनी होगी ज़रूर सुमंतो की। काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी, जानते थे कुछ तो हरकत होने वाली है।
फिलहाल नए बैटर आ चुके हैं क्रीज पर, संजू। संजू बाबा ऑन स्ट्राइक नाउ। सुमंतो अपनी अगली गेंद लेके आते हुए, काफी सूझबूझ भरी यहाँ पे बैटिंग का प्रदर्शन संजू द्वारा। टॉस्ड अप डिलीवरी थी, आगे की गई थी ये गेंद। काफी बेहतरीन प्लेसमेंट, कोई गलती नहीं। पार्किंग अड्डा की टीम यहाँ पे थोड़ी सी प्रेशर में नजर आती हुई, क्योंकि 37 पर 3 है, 3 विकेट्स जा चुके हैं। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, वापस एक बार अपील जरूर होते हुए, और जी हां, आखिरकार अंपायर ने सोचा, वेट किया और अपनी उंगली उठाई आसमान की तरफ, यानी कि संजू यहां पर वापस पवेलियन में जाते हुए सुनहरे बदक के साथ, गोल्डन डक के साथ वापस पवेलियन में लौटते हुए संजू। सुमंतो को मिलती हुई ये और एक सफलता। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर बाद स्कोर हो चुका है 37 पर 4। बढ़ते हैं वापस मैच की तरफ। कैमरामैन फोकस करो। एलबीडब्ल्यू की अपील यहां पे होती हुई, लेकिन अंपायर ने दर्शाया यहां पे लेग साइड के बाहर पिच करती हुई ये गेंद। काफी बेहतरीन एमसीए लेवल के अंपायर्स हमें इस मैच में मिले हैं। काफी अच्छी तरीके से खेल दिया, एक रन जरूर मिलेगा इस गेंद पर। अगली गेंद इस बार काफी अच्छा अतिरिक्त उछाल, फाइन लेग रीजन में फील्डर तैनात, एक रन पे होगा यहाँ पे समाधान। 3 गेंदें शेष इस ओवर की। पार्किंग अड्डा का खेमा यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर में दिखते हुए। काफी खराब गेंद इस बार, दिशाहीन गेंद, लेग साइड के बाहर जाती हुई। अतिरिक्त धाव, अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पे। देखिए, आपकी टीम बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहाँ पे पहले ही कर रही है, आपको एक्स्ट्राज रोकने की यहाँ पे जरूरत है। कीपर यहाँ पे जोरदार अपील करते हुए जरूर, क्योंकि जानते हैं काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है गुर्जर जेम्स की तरफ से।
इस बार काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी, वापस एक बार अतिरिक्त उछाल ज़रूर मिलेगा। एक गेंद शेष इस ओवर की। खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद जा रही है ऑन साइड पे, थोड़ी सी यहाँ पे मिस हिट। ओवर की समाप्ति। 9 ओवर बाद स्कोर हो चुका है 40 पर 4। काफी अच्छा स्ट्रोक इस बार। सुमन तो अपनी स्पेल यहाँ पे कंप्लीट करते हुए। पहली गेंद अच्छी तरीके से फेंकी जरूर थी। काफी बेहतरीन बाउंस इस बार। उछलती हुई ये गेंद मिस हो चुकी है बल्ले का, और गेंद का कोई संपर्क नहीं। देखिए बिलाल महाशय, आप हेलमेट पहन लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि सुमन तो यहाँ पे बाउंसर कर रहे हैं। देखना होगा अगली डिलीवरी क्या होती है सुमंतो की तरफ से। फुलर लेंथ यहाँ पे ब्लॉक होल में डालने की चाह जरूर थी। बिल्कुल ही आखिरी समय पे यहाँ पे रोक लिया इस गेंद को। क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल का प्रदर्शन। काफी अच्छे टप्पे की गेंद यहाँ पे, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर होती हुई। अगली गेंद यहाँ पे सुमंतो की अंदर की तरफ आई जरूर। बैटर तो बीट हो ही चुके थे, उसी के साथ साथ विकेट कीपर भी यहाँ पे बीट होते हुए। क्या सटीक लाइन और लेंथ की गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे सुमंतो द्वारा। जी बिल्कुल। गेंद यहाँ पे टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आती हुई। सिर्फ बैटर ही नहीं बल्कि विकेट कीपर भी यहाँ पे चौकन्ने रह गए। वापस एक बार काफी बेहतरीन गेंद अंदर आती हुई। एक रन पे करना होगा यहाँ पे समाधान। ओवर की यहाँ पे होती हुई समाप्ति। 10 ओवर बाद स्कोर हो चुका है 48 पर 4।
काफ़ी आगे गिरी हुई ये गेंद, डायरेक्ट हिट होता तो शायद एक रनआउट का पतन हमें देखने मिलता, एक और एक विकेट हमें शायद देखने मिलता। आफ्ताब, काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे, गेंद जाती हुई हवा में, क्या जाएगी सीमा रेखा पार, देखना होगा अंपायर के यहाँ पे क्या इशारा आता है। विकेट का यहाँ पे होता हुआ, विकेट का यहाँ पे होता हुआ पतन। सुमंतो ने पकड़ा काफी बेहतरीन कैच इस बार, एक और झटका लगा इस बार पार्किंग अड्डा को। 49 for 5। गुर्जर जेम्स की तरफ से यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन सूझबूझ भरी गेंदबाजी, हर एक नया बैटर आ रहा है क्रीज पे और कह रहा है अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। वापस पवेलियन में जा चुके हैं 5 बल्लेबाज अब तक और 50 रन भी अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं पार्किंग अड्डा के लिए। साझेदारी की आवश्यकता, देखना होगा अगले 10 ओवरों में कैसी साझेदारी बन पाती है। फिलहाल नए बल्लेबाज क्रीज पर खड़े हैं लक्ष्य, लक्ष्य को यहाँ पे लक्ष्य हासिल करना हो तो क्रीज पर खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी वापस एक बार आफ्ताब की तरफ से। खेलना चाहते थे कट शॉट ज़रूर, लेकिन अंदर की तरफ आती हुई ये गेंद मिस हो चुकी है। धीमी गति की गेंद इस बार सीधा ब्लॉक होल में, यॉर्कर टप्पे पे रिस्पेक्ट किया इस गेंद को। ओवर की समाप्ति यहाँ पे होते हुए 11 ओवर बाद स्कोर हो चुका है 49 पे 5। गेंदबाजी मार्ग पर अब आ चुके हैं प्रेम, प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। काफी बेहतरीन गेंदबाजी अब तक इस मैच में, 3 ओवरों में 15 रन देके 1 विकेट जरूर चटकाई है। सटीक लाइन और लेंथ, देखना होगा बिलाल के पास इस गेंदबाजी का क्या जवाब होता है। बढ़ते हैं वापस एक बार मैच की तरफ। प्रेम अगली गेंद लेके आते हुए, इस बार अपील हुई है जोरदार,
लेकिन अंपायर ने कर दिया है यहाँ पे। जी हाँ, सिग्नल यहाँ पे आता हुआ अंपायर द्वारा लेग साइड थाई पैड को लग के जाती हुई ये गेंद। इसके पहले वाली गेंद लेग साइड में बाहर जाती हुई और अगली ही गेंद ऑफ साइड वाइड डिक्लेयर होती हुई अंपायर द्वारा। धीमे गति की गेंद इस बार सीधा ब्लॉक होल में यॉर्कर टप्पे की गेंद। एक रन लेके यहाँ पे स्ट्राइक होते हुए रोटेट। स्कोर हो चुका है 50 पर 5। काफी बेहतरीन क्लासिक कवर ड्राइव इस बार। मिसफील्ड यहां पे जरूर होती हुई। प्रशंसा करनी होगी इस शॉट की, काफी बेहतरीन, बिल्कुल तकनीक से भरपूर पैर निकाला, खेल दिया इस गेंद को कवर्स के रीजन में। काफी बेहतरीन स्ट्रोक। अगली गेंद यहाँ पे प्रेम की, वापस एक बार धीमे गति की गेंदबाजी। परिवर्तन गति में वेरिएशन देखने मिल रहा है, हर एक गेंद अलग फेंकी जा रही है प्रेम की तरफ से। इस बार अक्रॉस खेलने का प्रयास, फील्डर तैनात। ओवर की समाप्ति 12 ओवर बाद। स्कोर हो चुका है 51 पर 5। स्कोर हो चुका है 51 पर 5। राजेश आ चुके हैं गेंदबाजी मार्ग पर। हवा में जाती हुई ये गेंद जाके गिरेगी नो मैन्स रीजन में। फील्डर यहाँ पे गेंद के पीछे भागते हुए जरूर। काफी खराब थ्रो। अगली गेंद इस बार काफी अच्छी टप्पे की गेंद जरूर थी, लेकिन खेल दिया इस बार कवर्स के रीजन में। लेफ्ट आर्म गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हैं और स्ट्राइक पे खड़े हैं राइट हैंडेड बैटर। एक क्लासिक मुकाबला इस क्लासिक T20 में। गेंद गिर के अंदर आनी लाजमी है। यहाँ पे जोरदार अपील होती हुई LBW की, लेकिन अंपायर ने यहाँ पे कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं जताया। शायद ये गेंद अतिरिक्त उछाल होती हुई। लेग साइड की दिशा में जाती हुई ये गेंद फाइन लेग रीजन में। फील्डर भागते हुए यहाँ पे गेंद के पीछे। गेंद रुकेगी जरूर। देखना होगा कितने रन पूरे करते हैं भाग के यहाँ पे। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स
3 रन यहाँ पे पूरे कर लिए है। काफ़ी बेहतरीन शॉट इस बार, कवर्स के रीजन में फील्डर ज़रूर तैनात। दूसरा रन लेने चाहते हैं यहाँ पे ज़रूर, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड से लक्ष्य ने बिलाल को वापस भेज दिया, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जी हाँ, इस बार सफलता प्राप्ति। सीधे गिरी थी ये गेंद स्टंप्स के लाइन में, और जी हाँ, काफ़ी अच्छी गेंद ज़रूर थी, लेकिन वापस एक बार अतिरिक्त की उछाल के कारण अंपायर ने यहाँ पे खासा इंटरेस्ट नहीं जताया। अगली गेंदबाजी पर आ चुके हैं मोमिन। इस बार कट किया पॉइंट्स के रीजन में, 1 रन पे समाधान। स्कोर हो चुका है 58 फॉर 5। बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी इस बार। काफ़ी बेहतरीन स्ट्रोक, अच्छा प्लेसमेंट, लेकिन 1 रन पे समाधान फिर से एक बार। यहाँ पे हवा में खेल दिया है इस गेंद को ज़रूर, और ये गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा पार। बड़ा शॉट यहाँ पे, बड़ा हिट आते हुए 6 रनों के लिए। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करते हुए अंपायर गेंद 6 नहीं बल्कि 4 रनों के लिए जाती हुई। अगली गेंद इस बार सीधा पैड्स पर, लेग साइड से बाहर जाती हुई ये गेंद, एलबीडब्ल्यू का कोई मौका नहीं। आखिरी गेंद इस ओवर की। काफी बेहतरीन कट शॉट इस बार खेल दिया है डीप थर्ड मैन रीजन में। 1 रन पूरा, ओवर की समाप्ति। 14 ओवर बाद स्कोर हो चुका है 64 फॉर 5।
बढ़ते हैं वापस एक बार मैच की तरफ। सुमंतो को लाया गया है वापस एक बार अटैक में, और सुमंतो का स्वागत यहाँ पे बिलाल ने किया है चौके के साथ। कट काफी अच्छा खेलते हैं बिलाल, अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण रन यहाँ पे जोड़ते हुए। 68 पर 5 है स्कोर पार्किंग अड्डा का। वापस एक बार हवे में खेल दिया था जरूर, गेंद जाती हुई थर्ड मैन रीजन में, लेकिन सिर्फ एक रन का चयन। सीधा फील्डर के हाथ में जाती हुई ये गेंद नॉन स्ट्राइकिंग एंड से बिलाल ने लक्ष्य को वापस भेज दिया। जानते हैं इस मौके पर रिस्क लेना काफी महंगा साबित हो सकता है। सुमन तो फिलहाल काफी अच्छी और इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए हैं अपने खाते में। 14 रन जरूर जाया किए हैं, लेकिन काफी सटीक गेंदबाजी। इस बार बाउंसर पढ़ नहीं पाए इस लेंथ को, चौकन्ने रह गए लक्ष्य जरूर इस बार। काफी अच्छा शॉट इस बार कवर्स की रीजन में। 2 रन लेना चाहते हैं जरूर, लेकिन सिर्फ 1 रन पे यहाँ पे समाधान। 2 गेंदें शेष इस ओवर की। अच्छे टप्पे की गेंदबाजी सुमंतो द्वारा। 1 रन पे समाधान। ओवर की समाप्ति। 15 ओवर बाद स्कोर हो चुका है 71 पर 5। सीधे बैट से खेल दिया था इस बार, लेकिन फील्डर जरूर तैनात। राजेश यहाँ पर वापस एक बार गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट आर्म बॉलर है। Meanwhile, the news from center is Lakshya has been retired out
and he has gone back to the pavilion. Altamesh, as soon he has reached the crease, he has started to try and go for big hits. I think initially this was the plan by parking Adda. Sent a hitter in the middle so that the score will get increased. We still have around 4.4 overs to go. Step out this time, tries to play it over the infield, and he has definitely succeeded in that. A good stroke. Definitely steps out, plays it fine, overcovers for 4 runs. This time, one bounce to the keeper. Steps out this time, Bilal. And yes, one bounce, two bounce, third bounce over the rope for 4 runs. The technique wasn't that great, but runs are conceded. I could sense a shift in the momentum now for parking Adda. They are going for big hits. They know it's very important. It's a risky one. It's a direct hit. Appeal is made to the square leg umpire, definitely, but he has completely denied that appeal because Altamash was clearly inside the crease. End of the 16th over, the score is 82 for 6. This time a thickish outside edge, and yes, it has gone in the favor of parking Adda team. I wonder if Gurjar James wanted to place a short third man maybe, but this has costed them with a boundary of 4 runs. Score is 86 for 6. Start of the 17th over, the very first ball dispatched away for 4 runs. Nicely played this time to the points fielder. Altamash steps out this time,
trying to go over the fielder standing at mid-off region. This time, straight drive, and yes, every ball's a boundary opportunity for his book now. He did not just hit that ball for 4. He's trying to make a statement that when I'm standing here, there's a still chance for Parking Adda to win this match. The score moves to 91 runs now. Full toss ball this time, dispatched out of the ground for a big hit. That's a sixer. It's a biggie. It's out of here. What a clean shot. What a clean stroke. Look at the smile on his face. He is absolutely delighted, and obviously Bilal standing at the non-striking end is also delighted with that shot. Aftab meanwhile bowling his last ball. Here he comes. Swing and a miss. End of the over. After 17 overs, the score is 97 for 6. Momin back into the attack. This time down the leg side. Umpire signals as leg byes. Strike has been rotated, and it is very important also for Parking Adda. On strike now is Altamash. Momin bowling to Altamash. Again a clean hit over the fielder's head, but the ball will stop due to slow outfield. 2 runs have completed. 100 up for Parking Adda. At some point of time at the start of this match, it was very difficult to believe that if the team would reach the 100 run mark or not, but definitely Bilal and Altamash trying to make a statement here. Short pitch delivery, dispatched away, and yes, it races away to the fence for 4 runs. Clean hit, clean stroke. Altamash at his best. This time steps out. What a beautiful shot that was. He is not just hitting the ball, he is dispatching the ball out of the ground. Clean stroke, clean hit. Beauty at its best. Altamash, remember the name. Steps out again, trying to play over the fielder's head, gets the treatment. 1 bounce over the rope
for 4 runs. Altamash coming in as a savior for parking Adda. End of the over. After 18 overs, the score is 115 for 6. Sumanto comes back into the attack from pavilion end, bowling his last over. Altamash facing Sumanto. This time a little bit of variation in the speed. A slower one, but an impactful one. Every run is important now. Sumanto again. Altamash facing Sumanto. Short up his delivery this time. Again, dispatch out of the ground. I feel the ball did not need a boarding pass to board that plane, because Altamash is sending every ball out of the park. He has come with a clear intentions. Slower one this time. Has it gone all the distance? No, it has not. The ball finds the fielder and Altamash will have to move back to the pavilion. But what a cracking inning by Altamash. Absolutely delight to watch. The crowd is entertained. The players are entertained. The dugout is clapping for this boy Altamash. Remember the name. Absolutely delight. A great batting effort for his team. After 18.3, the score is 121 for 7. Meanwhile, new batter on crease is Rafiq. He has also come with the intention to hit every ball possible. Altamash has done his work. Now it's the responsibility of Bilal and Rafiq to put up a good score.
Nicely played this time. We'll have to see if they complete the 2 runs. They definitely do. It was a full length delivery, slight miss hit by Bilal, but they have successfully managed to complete 2 runs. If it would have been a direct hit, then we would see a run out. But so far, so good. Bilal on strike again, playing on 52. This time a clean shot over the covers. There was a chance of catching, but it looks like this opportunity has been missed by the fielder. It was a difficult catch. It is difficult to come and run in hard towards the ball, but what's done is done. 19 overs gone, 126 for 7. Last over to go. Rajesh brought back to attack and dispatched one bounce over the rope. What a welcome, Rafiq. He has played that stroke quite beautifully. It races away to the fence for 4 runs. Last 5 balls to go in this over. Here it comes. Rajesh to Rafiq. Slightly slower one this time. Down the leg side. Made no mistake. Let that ball go away because the team will get an extra run here. Parking Adda standing at 131 for 7. Rafiq facing Rajesh. What a clean hit that is. Is it out of here? It is almost out of here, but I guess it's yes, the umpire is checking whether it's a 4 or 6. Yes, the signal is confirmed by the umpire. It's a 4. Again trying to play full, but this time a thickish outside edge and gets the treatment. The ball races away to the fence for 4 runs. Absolute delight to watch. Everything that these batters are touching is either going away to the fence or being dropped by the fielders. The score has now moved to 139. Still 3 deliveries to go. Here it comes. Rajesh to Rafiq. The call is for 2. But they will have to be satisfied with just 1 run. See here. Every ball Rafiq is trying to hit it out of park. Some edges here and there, and the ball is racing away to the fence. What a clean hit this time. There is a fielder present at the deep boundary region definitely, but again he has dropped that catch. One lifeline again provided to Bilal. Last ball to go. Everyone on their toes. 142 for 7. Are we going to see
One more big hit, one more sixer on this ball. Definitely he had put in all his effort to race it away to the boundary for 4 runs, but in the end what we see is a run out. It was a short of edge delivery, tried to pull that. A nice good throw, 1 bounce, 2 bounce, 3 bounce to the keeper. So after completion of 20 overs, the score is 144 for 8. Now Gurjar Gems need 145 to win in 20 overs.
Here we go. Start of the second innings. The score is 145 needed from 20 overs. Starts off with the very first ball. Gurjar Gems, they have started ticking their scoreboard. First runs on the board. Meanwhile, the opening batters from Gurjar Gems are Rajesh and Mahesh, and from the Parker Adda, the opening bowler is Hitesh. A quicker one this time, played on to the leg side. The keeper has appealed for direct hit, obviously, but square leg umpire has denied that appeal. Rightfully bowled this time outside off stump. A very good delivery by Hitesh. Definitely we are going to see some fierce spell from Parking Adda this time. Again swing and a miss. A very good line and length bowled by Hitesh. Here we go, last ball of this over, and yes, here it comes, the first boundary of second innings. The ball races away to the fence for 4 runs. A good strike by batter this time. Thickish outside edge, and the ball races away to the boundary at the third man region. After 1 over, the score is 6 runs without any loss. So with a good start, after 1 over, the score is 6 runs. New bowler from the pavilion end is Manoj. Straight away started with the spin attack. Parking Adda, this time slightly outside the leg stump delivery. Definitely it will be called as a wide ball,
as signaled by the umpire also. Nicely placed this time. The batters will have to satisfy on the 1 run here. So far so good, 8 runs on board. They are chasing a total of around 137 runs in 18.5 overs. It may look like a small total, but definitely parking Adda bowlers would have some strategy in place. This is something that they need to definitely avoid here, bowling some extras, because it is going to cost them sooner or later. Moving back to the match, this time played on to the covers. Fielder present over there. Meanwhile, Manoj has bowled only 2 deliveries on this over as of now, and still 4 balls to go. Again a slower one. Slightly tossed up. Beautifully placed for 1 run. Here we go. The next ball swept nicely. And yes, the ball will race away to the boundary for 4 runs. Slow and steady, there she goes for 4 runs. It was absolutely delight to watch that sweep shot coming from Mahesh's bat. He waited for that ball. Timing is very crucial while playing such important cricketing shots. 9 runs on board, 3 balls to go in this over. A slower one again, waited on that ball. Player present at the short covers region. Last ball to go. Straight into the block hole this time. Is there a chance of a run out? There was definitely a chance of run out, but the throw was not that perfect. End of the over. After 2 overs, the score is 15 runs. Here we can see it was a slower delivery, slightly tossed up. Meanwhile, Hitesh on his second over, completing his spell. It's a great combination we can see from the parking Adda bowlers. A pacer and a spinner onto the attack, back to back. Pretty much outside off stump, but yes, it will be called as a legal delivery as the umpire has not shown any interest in giving it as a wide. Though it was pretty much outside off stump, it was still in the region where batter could hit it. Next ball coming inside, chance of a run out, a bit of a fumble by bowler himself. Well, you need to be aware all the time. You need to take on such opportunities. You have to first collect the ball and then think of throwing it.
It was miscommunication between both batters, but eventually they have successfully completed a run. This time again pitched full, trying to play it over the covers. Mahesh this time. No run on that ball, but it would have been a definite risk if there was a outside edge. Three balls to go in this over. Played it onto the onside. Fielder is present at short fine leg, and the batters will have to satisfy with only one run. Nicely played, beautifully placed this time. Again there is a chance of a run out, but somehow parking Adda fielders are not able to aim onto the stumps. They are missing every hit. Beautifully placed again, straight to the fielder standing at cover region. So let me remind all the viewers and spectators, the first 6 overs are power play overs, and in the first innings we saw that parking Adda team had lost their crucial wickets in the power play only, but somehow Gurjar Gems have successfully put up a score of 18 runs in 3 overs. So as the power play rules suggest, only 2 fielders are outside the circle. Manoj meanwhile comes back to complete his spell. Slower one, full toss ball, direct hit. Is he gone? The umpire shakes his head, showing no interest. He was well within the crease, and eventually that single got converted into a double. Next ball, this time into the gap. The ball is racing away to the fence, and the umpire signals as well. It's a boundary, 4 runs. What a beautiful cricketing shot. Played with a full bat right on top of the ball. Nicely played this time, not taking much of a risk. Defensive approach. On to the leg side this time, and the umpire signals it's a wide ball. That means he'll have to bowl that ball again. A nice delivery this time, onto the bat. Played it very quickly. Slight change in the pace so we could see from Manoj. Definitely the team is hunting for wickets. Again a defensive shot this time.
It's a classic setup. It's a classic T20 setup between Gurjar James and Parking Adda. Again into the gap, stand and deliver. It's a classic T20 style, or rather, I would say it's a classic test match style shot. End of the 4 overs, the score is 30 runs without any loss. Thickish outside edge again. Ball races away, one bounce to the third man fielder. A single completed. 31 on board. Now the asking rate is around 7.2. Gurjar James need 114 runs to win from 15.5. Straight to the bowler this time. It was a over pitch delivery by Hitesh. No mistake made there by Mahesh. Defended it pretty nicely. Swing and a miss this time. Trying to play that ball with a straight drive, but completely missed by Mahesh. Hitesh meanwhile is looking for that nick. He's waiting for that edge. On the full this time, onto the covers, and it's a huge appeal for run out. It was a direct hit, definitely. Nice pickup and direct throw, direct hit. He would have been gone to the pavilion. One bounce hit, he is saved. Swing and a miss again. Mistake by keeper. The ball races away to the fence for 4 runs. Last ball to go in this over. The score is 35 already. It's a bit of a surprising stance by Mahesh. He's showing all the 3 stumps. It's a huge appeal, but the batter survives. After 5 overs, the score is 35 without any wicket.
New bowler from Pavilion End is Bilal. It's a classic T20 final between Gurjar James and Parking Adda. Here it comes, Bilal to Rajesh. Nice swing, full length delivery, but we'll have to be satisfied with just one run. It seems that Gurjar James will easily chase this target of around 145. What a beautiful shot! The sound of the bat right from the middle of it was so good that it had to race away to the boundary for 4 runs. There she goes, away to the fence for 4 runs. One bounce, 4 runs, textbook power play batting by Mahesh. Down to the leg side this time. It's a wide ball. Again, swing and a miss. This is the beauty of T20. On one ball, you might see the ball racing away out of the ground, and the very next ball, the bowler comes back with a nice and full pitch delivery. That's T20, fast, fierce, and full of fireworks. Again, swing and a miss. Nice comeback by Bilal after conceded that 4. Here you see the ball is hitting the right arcs on the pitch. 2 balls to go in this over. This time making no mistake, defending it like a wall. Last ball to go. This probably will be end of the power play overs after 6 overs completion. This is the last chance to hit a big boundary out of the ground, or maybe a grounded shot for boundary. A very good length again, this time by Bilal. End of 6 overs. The score is 41 without any loss.
तो 6 ओवर बाद स्कोर हो चुका है 41 रन। शुरुआत यहाँ पे अक्षय द्वारा अगले ओवर की पवेलियन एंड से डालती हुए ये गेंदबाज पहली गेंद काफी बेहतरीन शुरुआत, स्विंग काफी अच्छा मिल रहा है अभी भी, यानी कि बॉल मेंटेन करते हुए दिख रही है पार्किंग अड्डा की टीम। गुर्जर जेम्स को जीत के लिए चाहिए होंगे 104 रन 13.5 गेंदों में। अगली गेंद वापस एक बार अच्छी तरीके से खेल दी थी, डायरेक्ट हिट का यहाँ पे मौका बनता हुआ जरूर। देखना होगा अंपायर का इशारा यहाँ पे क्या आता है। जी हाँ, अंपायर ने यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया है। बैटर यहाँ पे क्रीज में पहुंच चुके थे, जोरदार अपील जरूर हुई थी, थोड़े से यहाँ पे लेट हुए फील्डर थ्रो करने के लिए, और उसी का नतीजा राजेश को मिलता हुआ यहाँ पे जीवन दान। अगली गेंद अक्षय टू महेश, उठा के मारने का प्रयास जरूर यहाँ पे होता हुआ, लेकिन स्विंग और मिस। शायद इस गेंदबाज की गति को पढ़ नहीं पाए महेश बेहतरीन तरीके से, इसी का नतीजा ये गेंद होती हुई डॉट डिलीवरी। स्लाइटली फुलर थोड़े से आगे टप्पे की ये गेंद फील्डर के हाथ में जाती हुई ज़रूर, लेकिन वक्त रहते 2 रन पूरे कर लिए। काफ़ी बेहतरीन और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों बैटर्स के बीच में दिखता हुआ। जी हाँ, जैसे कि आप रिप्ले में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लिक किया था, अच्छा यूज़ ऑफ रिस्ट्स, बेहतरीन थ्रो ज़रूर हुआ था, लेकिन 2 रन पूरे हो गए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई ये गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पे वाइड के स्वरूप में। काफ़ी बाहर थी ये गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप के मानो 10वें स्टंप पे ये गेंद फेंकी थी। वापस एक बार मैच की तरफ बढ़ते हैं। इस बार थोड़ी सी अंदर आती हुई ये गेंद, कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे जरूर महेश, लेकिन बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं। इस ओवर की आखिरी गेंद, और जी हाँ, नतीजा बिल्कुल वही, मानो जैसे ये रीप्ले देख रहे हैं हम। काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पे अक्षय द्वारा। ओवर की समाप्ति 7 ओवर बाद स्कोर हो चुका है 45 विदाउट एनी नुकसान।
अगले ओवर की यहाँ पे शुरुआत करते हुए बिलाल, पहली गेंद काफी बाहर की तरफ फेंक दी थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप। कोई चांस नहीं मिला यहाँ पे राजेश को ये गेंद खेलने का। 12.5 गेंदों में 100 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए गुर्जर जेम्स को। अगली गेंद इस बार स्टेप आउट करके मारने का प्रयास जरूर यहाँ पे राजेश द्वारा। वो गेंद जाती हुई यहाँ पे फील्डर के हाथ में, जो कि खड़े हैं लॉन्ग ऑफ रीजन में। 1 रन पे यहाँ पे होगा समाधान। जीत के लिए अब आवश्यकता 99 रनों की। इस बार उठा के मारने का प्रयास जरूर यहाँ पे होता हुआ, लेकिन फाइन लेग रीजन में जाती हुई ये गेंद रुकेगी जरूर। फील्डर तैनात, फील्डर मौजूद। देखना होगा कितने रन बटोरते हैं अपने टीम के लिए यहाँ पे। शॉट वैसे काफी अच्छा खेल दिया था, फ्लिक किया था जरूर। ऑन द राइज खेलने का यहाँ पे प्रयास, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। काफी बेहतरीन स्ट्रोक, ग्राउंडेड शॉट। ऑन द अप, ऑन द राइज खेल दिया था इस गेंद को, और ये गेंद जाती हुई चौके के लिए। गुर्जर जेम्स धीरे धीरे अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए जीत के लिए चाहिए होंगे 12.2 गेंदों में 93 रन। ओवर की आखिरी गेंद, ये गेंद हवा में जाती हुई, फील्डर यहां पे जरूर नीचे आएंगे गेंद के, और काफी सेफेस्ट हैंड, यानी कि विकेट कीपर के दस्ताने, विकेट कीपर के हाथ में जाके गिरी ये गेंद। विकेट का यहां पे होता हुआ पतन। थोड़ी सी अंदर आती हुई ये गेंद जरूर थी, हवा में खेल दिया था इस गेंद को। काफी खराब शॉट सिलेक्शन, और नतीजा विकेट का यहाँ पे होता हुआ पतन। फिर से एक बार रिप्ले में हम जरूर देख सकते हैं। बैट की टॉपेज लगी थी और काफी सेफेस्ट दस्ताने। 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 52 for 1। गुर्जर जेम्स के लिए आवश्यकता है 93 रनों की 12 ओवर्स में। पार्किंग अड्डा की टीम यहाँ पे जरूर प्रयास करती हुई
विकेट्स के लिए, और एक सफलता भी ज़रूर प्राप्त हुई। पहली विकेट का यहाँ पे पतन हो चुका है। काफ़ी अच्छा शॉट इस बार खेल दिया है, लेकिन फील्डर तैनात। एक रन होगा पूरा। अक्षय अपनी दूसरी गेंद डालते हुए, अंपायर का इशारा यहाँ पे देखना होगा ज़रूर। वाइड दी जाएगी इस गेंद। एक रन यहाँ पे जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में। स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 54 पर। फुल टॉस डिलीवरी। अक्षय वापस एक बार गेंदबाजी मार्क पर। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की रन जरूर लेते हुए। थ्रो काफी खराब था वैसे अक्षय की तरफ से। स्टंप्स तो नहीं, पर शायद मिलान को यहाँ पे लग सकती थी ये गेंद। 88 रनों की आवश्यकता है 11.2 गेंदों में। और काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर इस बार। सीधा जाके लगी ये गेंद स्टंप्स पर। अंदर आती हुई ये गेंद। अक्षय स्ट्राइक्स हियर। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना। सीधा स्टंप्स में जाती हुई ये गेंद, और एक विकेट का यहाँ पे होता हुआ पतन। 57 for 2, लास्ट बॉल टू गो इन दिस ओवर।
काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग वापस एक बार अक्षय द्वारा। पिछली गेंद पर विकेट का पतन ज़रूर हुआ, लेकिन इस बार नए बैटर आ चुके हैं क्रीज पर। संदेश, उनका स्वागत यहाँ पे किया है फुल पिच डिलीवरी के साथ। ओवर की समाप्ति 9 ओवर बाद स्कोर हो चुका है 57 पर 2। बिलाल अगली ओवर डालते हुए। बैट की अंदरूनी एज लग के ये जाती हुई गेंद फाइन लेग रीजन में। ओहो हो, यहाँ पर लगभग ये गेंद जाके लगी थी स्टंप्स पर। ओवर थ्रो का यहाँ पे मौका। अल्तमश यहाँ पे फील्डिंग करते हुए डीप थर्ड मैन रीजन में। शायद क्या और एक रन यहाँ पे बन सकता था, लेकिन गुर्जर जेम्स के दोनों बैटर्स कोई भी रिस्क यहाँ पे लेना नहीं चाहते, क्योंकि जानते हैं सिर्फ 86 रनों की आवश्यकता है, वो भी 10.4 गेंदों में। अगली गेंद स्लोअर वन, गति में परिवर्तन। काफी नाखुश होंगे बिलाल इस बार। अच्छी गेंद डाली जरूर थी, लेकिन आखिरी समय में इस गेंद ने काटा बदला और जाती हुई ये स्टंप्स के ऊपर से। 3 गेंदें शेष इस ओवर की। अभी भी 86 रनों की आवश्यकता है गुर्जर जेम्स को। पार्किंग अड्डा यहाँ पे कमबैक करने की कोशिश करती हुई। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी इस बार। स्क्वायर कट मारना चाहते थे मिलान जरूर, लेकिन बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं। 2 गेंदें शेष इस ओवर की। इस बार डाउन द लेग साइड जाती हुई है गेंद। वाइड करार दी जाएगी अंपायर द्वारा। ये गेंद फिर से करनी होगी। काफी नाखुश होंगे बिलाल। विकेट का यहाँ पे मौका बनाना चाहते हैं जरूर, लेकिन सफलता प्राप्ति यहाँ पे होती हुई दिख नहीं रही है। इस बार कीपर द्वारा जोरदार अपील यहाँ पे होती हुई, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। काफी अच्छी गेंद थी वैसे। इस ओवर की आखिरी गेंद
स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं 60 रन. लास्ट बॉल टू गो. अभी भी 85 रनों की आवश्यकता. उठा के खेलने का यहाँ पे प्रयास होता हुआ जरूर. गेंद जाएगी आसमान में. क्या फील्डर नीचे आते हैं गेंद के. ये तो लगान मूवमेंट हो गया. एक गेंद के नीचे 3 फील्डर और किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया. और नतीजा ओवरथ्रो के 2 रन भी जोड़ दिए जाएंगे. ओवर की समाप्ति. इस आखिरी गेंद पर कुल 3 रन आ जाएंगे. 10 ओवर बाद स्कोर हो चुका है 63 पे 2. Here we go. Gurjar Gems need 82 runs to win from 10 overs. Starting from the garden end this time, Akshay. Very first ball
cut it away nicely. They'll get just one run. Next ball, this time Fuller straight to the bowler. He did got his hand onto that, but the strike will be rotated. A single will be conceded. 4 balls to go in this over. Gurjar Gems still need 80 runs to win from 9.4 overs. Oh, what a beautiful delivery that was. Milan was completely surprised by that extra bounce. He was definitely looking to hit that ball on the front foot, but was completely awestruck by Akshay's short pitch delivery. He also got a bit of a bounce on that ball. Akshay is striking hard, not letting go, not giving up. Here he comes. The next ball. And there is an edge. Meanwhile, luck is not going Akshay's way. As we can see, there was a clear thick outside edge. Keeper did not put in his 100% efforts. If he would have died, then definitely it would have made a comfortable catch. Akshay bowling his next ball. Right on the money this time, outside off stump. Swing and a miss. It's a dot ball. Last ball to go in this over. Akshay on bowling mark. Sandesh facing Akshay. This was a very good delivery again. Beautifully hit the hard deck of the pitch. No run on this ball as well. After 11 overs, the score is 66 for 2.
So finally the parking Adda captain has brought in the spin attack now. It's Manoj bowling his first over. Gurjar Gems need 79 runs to win from 9 overs. First ball of Manoj. Well, that really spun well. Left arm spinner, right-handed batter. It's a classic competition between both players. Slight changes in the field as we could see. Leg side is completely open. They are now inviting the batters to hit few boundaries. Completely missed this time, a swing and a miss. Trying to play over the mid-on region, but the ball races away to the mid-wicket. It was a little bit of thickish inside edge. There is a fielder present. Pitched it up this time. Will the ball race away to the boundary? We'll have to see. We'll have to check. And we'll have to wait for the umpire signals. Yes, he signals that the ball has raced away to the boundary for 4 runs. There was a definitely good effort by Altamash down there running from the third man region, but he could not stop that ball. Trying to play it across this time onto the square leg region. Bit of a fumble between Altamash and the fielder standing at the fine leg region. They have successfully completed 2 runs here. Well, if you are defending a small total, you need to be sure with your fielders. Full toss ball this time. Trying to put it away. Efforts were made definitely. A bit of a fumble as well, but due to the slow outfield, the ball has stopped. Here we go, full toss ball. He was trying to dispatch that ball away over the covers fielder for a sixer, but a slight miss hit. End of 12 overs. It's 77 for 2. .68 needed from 8 overs. Suraj on the attack now. Starts off with a wide. Steps out this time, but there's a fielder present at the long on region. Sandesh will have to be satisfied with just a single this time. 66 more needed from 7.5.
trying to cut it away. This time, a very poor throw by Altamash, and they have successfully completed 2 runs. A single being converted into a double. Meanwhile, Suraj has a bit of action which reminds me of Indian spinner R. Ashwin. Again, played to the fielder at point region. There is a chance of a run out. We'll have to see. We'll have to wait for the confirmation from the umpire. Yes, definitely he was way out of the crease. Fumble by the bowler here, and the umpire signals as not out. You have to first collect the throw and then put it on stumps, but this time Suraj made some mistake. Here we go, the next ball, way outside off stump, giving away too many extras here. This is going to be definitely costly for the parking Adda team. Gurjar Gems now need 63 runs from 7.3 overs. Swept away nicely this time into the mid wicket region. Still have 2 balls to go in this over. Trying to play it full. There's a fielder underneath the ball and he will take the catch. After all, another wicket falls. It was a great effort. The ball lands in the safest hands on the ground. It's a very good wicket. It's a very good catch. After 12.5, the score is 83 for 3. End of 13 overs. The score is 83 for 3.
Manoj back onto the attack and starts off with a wide. Gurjar Gems need 62 more runs to win. Again swept away nicely. The ball finds the fielder. Just one run completed. A single converted. There is a chance of a run out. We'll have to check. It was a very good throw, and the umpire has raised his finger. He's given a run out. Everything seems to going away from Gurjar James at this moment. Another wicket falls. Another batsman goes back to the pavilion. It's 86 for 4 now. Trying to play short over the covers fielders, but there is a fielder present at the short covers. Here we go. Here we go. The next ball. This time a little bit quicker delivery. Played it nicely. The ball races away to the fielder standing at long off, and the batters will have to satisfy with just a single. 58 runs more needed for Gurjar James to win. Steps out, clears it. It's out of here. That's a biggie. Out of the ground. Away she goes for a sixer. It's a biggie. He waited for that ball. He stepped out and punched it outside the ground for a sixer. Again trying to play full this time. Calls for a single, but the non-striker immediately say no, as he knows there is a risk in that run. 14 overs are completed. The score is 93 for 4.
काफ़ी अच्छी गेंदबाजी इस बार, सीधा ब्लॉक होल में ज़रूर थी। क्या यहाँ पे रनआउट का मौका बनता हुआ? जी हाँ, देखना होगा। अंपायर का इशारा यहाँ पे आ चुका है। विकेट का यहाँ पे पतन हो चुका है। वैसे ये रन लेने की आवश्यकता थी नहीं। नॉन स्ट्राइकर काफ़ी उत्साही लग रहे थे ये रन लेने के लिए, लेकिन इस रन के साथ उन्हें वापस पवेलियन लौटना होगा। सर्फ एक्सेल दाग अच्छे है, लेकिन यहाँ पे विकेट का पतन होते हुए। आखिरी गेंद इस ओवर की, स्विंग और अ मिस। हितेश की यहाँ पे स्पेल खत्म होती हुई। 16 ओवर बाद स्कोर हो चुका है 105 पर 5। Was there a appeal? We'll have to see. It was a very good effort by Bilal. He looks little injured, but definitely good effort.
Well, the news from the center is that Bilal is back to the pavilion as he got injured. So Manoj will continue his over. Very first ball, nice delivery this time, pitched up, and there was no connection between the bat and ball. Gurjar Gems still need 40 runs to win from 3.4 overs. Manoj, meanwhile, has changed the sides. Now he'll be bowling around the wicket. Sliced it away nicely. There is a fielder present at the deep covers region. Thumb, thumb. Wicket. Akshay is brought back to the attack. This will be his last over, and definitely. And the very first ball, he's struck back. Appeals for LBW, but the umpire has completely denied this appeal. So the Gurjar Gems need 38 runs to win from 2.5 overs. Still far away from chasing this target. They need to hit some big hits in this over. And here it comes. It's out of here. It's a sixer. It's a biggie. What a stroke.
Are we going to witness a nail biter finish in this coming 3 overs? Here it goes, Akshay. And this time Akshay strikes back. What a comeback for a fast bowler. The previous delivery he was hit for a 6 out of the park, and the very next ball he has taken a wicket straight onto the stumps. Beautiful delivery by Akshay. Straight into the block hole. The batter had no option but to leave that ball, and the ball kisses the stumps. After 17.3, it's 113 for 7. Still more 32 runs to win from 2.1 overs. Full toss ball this time. Ball goes straight to the mid wicket fielder. Appeal is huge for the run out, but the umpire denies the appeal. So now the Gurjar Gems need 31 runs to win from 2 overs. That's 12 ball 31. 12 ball 31. 114 for 7 wickets after completion of 18 overs. Meanwhile, Manoj is brought back to the attack. 2 overs to go. 12 balls, 31 runs. Here we go. A nail biter finish in the classic T20 final. Very first ball, straight to the bowler this time, and he makes no mistakes. Another wicket falls. Another batter goes back to the pavilion. It's 114 for 8 now.
Yes, definitely it's a nail biter finish. The Gurjar Gems need 30 runs to win, whereas the Parking Adda need 2 wickets to win this match, to win this classic final, to lift the trophy. Let's see who wins this match. Flicked it away this time onto the leg side. Comfortably taken a single. Well, obviously, Gurjar Gems cannot win this match by converting singles and doubles. They need to go for big hits, they need to go for sixes and fours. Steps out this time. It's an stumping effort by the keeper, but the square leg umpire has completely denied that request. Two balls to go in this over. Still required 29 runs to win. And another wicket falls. Another man goes back to pavilion. It's Pradeep this time. Manoj has a strike back. Here we go. Parking Adda need one more wicket to win. Meanwhile, Gurjar Gems are standing at 117 for 9 now. Last over to go. 6 balls, 28 runs to win. Are we going to witness a surprise here? Are we going to witness a miracle here? Let's see who is going to bowl this last over now. 6 balls, 28 runs to win. Here we go. Manoj is bowling the last over. 5 balls, 27 needed. Two slips in place, and it's a very poor delivery outside leg stump. See, these are the chances that are being created by the bowling team. All they need to do is just bowl 5 legal deliveries to win this match. It's a biggie.
It all boils down to these three balls now. 3 ball 21. 1 wicket needed for Parking Adda to win. Played over the fielder's head. The ball is racing away to the boundary, but due to slow outfield, the ball will stop. Here we go. Last ball to go. Just one ball away to win this match. Parking Adda. Tossed it up high into the sky, and the team is all out. Parking Adda has won this match. The catch was comfortably taken. That's all from the center now. Parking Adda has won this match. That's the news from the center. Parking Adda has won this match by 17 runs. And thank you everyone for watching this live stream. I'm your voice, Kapil Bande, signing off for this match. Thank you all.